doing well at your home. First of all, I would like to thank you all for your enthusiastic participation in my previous online learning session. It is due to your participation that I have got 145 subscriptions and more than 700 views in just 24 hours. It is requested to you all, please stay tuned and subscribe this channel in order to keep pace with your studies. So today in this session, we are going to discuss about means of creating disabled-friendly environment in our schools. According to the statistics of United Nations, 6 to 10% population around the globe, or 650 million people, are living with certain sort of disabilities. So in this regard, it is our responsibility to cater the requirement of children with special needs. As a teacher, one must know how to create a disabled-friendly environment in the regular classroom settings. नमस्कार छात्रों, इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने पिछले ऑनलाइन शिक्षण सत्र में आपकी भागीदारी के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपनी पढ़ाई के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसलिए आज इस सत्र में हम अपने स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के साधनों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में 6 से 10% आबादी या 650 मिलियन लोग किसी न किसी प्रकार की अक्षमताओं के साथ जी रहे हैं। तो इस संबंध में ये हमारी और हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करें। एक शिक्षक के रूप में हमें ये पता होना चाहिए कि हम नियमित कक्षा में किस प्रकार से इन विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है क्रिएटिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन आवर स्कूल्स। So students, I welcome you all in this session. In this session, we are trying to understand means of creating disabled-friendly environment in a school. The process of inclusion in a school is a challenging process. In order to create a maximum friendly environment for disabled students in a school, it requires a higher level of ethical and moral commitment from students, community, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। किसी भी विद्यालय को समावेशी प्रारूप देना एक जटिल प्रक्रिया है। विद्यालय को समावेशी प्रारूप देने के लिए समाज में उच्च स्तर के मूल्यों, सिद्धांतों एवं संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि किसी समाज में यह गुण पाए जाते हैं तो कोई भी विद्यालय समावेशी प्रारूप प्राप्त कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी ट्राई टू डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट कैन लीड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ disabled friendly environment or inclusive environment in a school. Let's discuss means of creating disabled friendly environment in the school. In this context, the first point is public awareness, सामाजिक जागरूकता. Second point is policies and planning, समायोजन एवं नीति निर्माण. Third point is securing financial resources, वित्तीय साधनों को सुनिश्चित करना. And the fourth point is ensuring participation. Let's discuss these 4 points one by one. In this context, the very first point is public awareness, सामाजिक जागरूकता. In many societies, certain superstitions, fears and misconceptions about the disability resulting in negative attitudes towards the educational opportunities of students with special needs. School must have put efforts towards greater access to build an environment and greater educational opportunities for the children with special needs. By changing such attitudes and perception within the society, it may help to develop an inclusive infrastructure for students with special needs. सामाजिक जागरूकता. जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले तक शिक्षा के अभाव तथा रूढ़िवादिता के कारण किसी भी प्रकार की विकलांगता को श्राप या कर्ज समझा जाता था। अतः इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा रोजगार एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था तथा इस परिप्रेक्ष्य में स्कूल प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि वह समाज को इन समस्याओं के प्रति जागरूक करे। सामाजिक सहभागिता किसी भी विद्यालय को समावेशी प्रारूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। Our second point is policies and planning. School must formulate their objectives and standards on the inclusion of children with disabilities
In a policy framework, policies are statements about the objectives and goals and strategies by which they are to be achieved. Hence, the right of the children with disabilities to access the school and education can most effectively supported by comprehensive school policies and plannings. समायोजन एवं नीति निर्धारण, स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनाई गई नीतियां समावेशी वातावरण निर्धारण में अभूतपूर्व योगदान देती हैं। इसलिए स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि वह ऐसी नीतियों का निर्माण करे जो विद्यालय में विकलांग छात्रों के समायोजन में सहायक हो। So our next point is securing financial resources. In order to give access to education and school for children with disabilities, source of funding need to be identified. The school should focus on cost-effective measures in such a way by which every child with or without disability ensures his or her right to education with less financial burdens. Special financial arrangements for disabled students must be managed by the school in order to build conducive environment for the डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। किसी भी विद्यालय को समावेशी प्रारूप प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी उपलब्धता के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता रहती है। अतः इस संदर्भ में वित्तीय साधनों को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। Our fourth point is ensuring participation. The function of school needs to be redesigned in order to ensure the maximum participation of the children with special needs. Hence, the importance of a participatory process is to define the requirement and features to be incorporated in the school functioning, in which the children with special needs can express their own needs. विद्यालय की कार्यशैली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें हर प्रकार का विद्यार्थी छात्र अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए विद्यालय को समय समय पर अलग अलग प्रकार की सर्वांगीण विकास हेतु अलग अलग योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। विद्यालय की कार्यशैली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें हर प्रकार का विद्यार्थी छात्र अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। So our next and the fifth point is classroom environment. Sixth is teacher assistance and group work. Seventh is self-determination, and the eighth point is diversified curriculum. Let's explain these points one by one. The first one is classroom environment. Let's discuss the fifth point. One of the first things at the beginning of the school years is to organize, arrange and decorate classrooms. The physical environment of a classroom plays a vital part in the ownership among children with special needs. Warm classroom environment, organization of furniture in the room is also important. There should be enough space for all students to easily move throughout the classroom. Teachers should consider the use of universal design. क्लासरूम्स साफ सुथरे होने चाहिए, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होने चाहिए तथा कक्षा का माहौल अनुकूल होने के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी के समायोजन योग्य होना चाहिए। कक्षा में घूमने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान रहना चाहिए। फर्नीचर, शिक्षण सामग्री यथाव्यवस्थित ढंग से क्लासरूम में सुसज्जित होनी चाहिए। Our next point is teacher assistance and group work. School can manage their classrooms encouraging and supportive by teaching disabled children to problem solving and conflict resolution skill in a small groups and whole class meetings. In an inclusive classroom settings, a teacher should always be ready to assist his students and meet the needs and requirements of his daily life. School can manage their classrooms by teaching disabled children problem solving and conflict resolution skills. Classroom meetings can help to create a sense of belonging and trust among students. Classroom meetings can also encourage children to work together to solve problems while participating in pro-social skills. अध्यापक सहायता व समूह कार्य। विद्यालय में सभी को समूह के रूप में कार्य करना चाहिए। अतः अध्यापकों और बच्चों के बीच विश्वास की भावना होनी चाहिए। अध्यापकों को समय समय पर अपने विद्यार्थियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे छात्रों में सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। Our next point is self-determination. One of the most important skill teacher can give to their students, especially those with disabilities, is to empower them to advocate for themselves. Students need to be able to make their needs and wants known. As students get older, they need to understand and be able to describe their strengths and weaknesses to their classroom teachers
and other peoples with whom they work. आत्म प्रतिबद्धता व स्वनिर्णय। अध्यापकों को अपने छात्रों में आत्म प्रतिबद्धता और स्वनिर्णय की धारणा को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस संदर्भ में छात्रों को अपने अधिकारों, रुचियों, आवश्यकताओं को व्यक्त करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। अध्यापकों को इस तरह की शिक्षण पद्धति का अनुकरण करना चाहिए जिसमें वह अपने बच्चों को स्वयं निर्णय एवं आत्म प्रतिबद्धता पैदा कर सकें। Our next point is diversified curriculum. The school must follow such a curriculum which equally beneficial for the children with special needs as worthy for other normal children. Curriculum must be diversified in such a way that it can be easily processed or accommodated by disabled students without any difficulty. पाठ्यक्रम में विविधता। स्कूल या कक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह हर प्रकार के छात्रों की अभिवृत्तियों के अनुकूल हो, जिसका अनुकरण छात्र बिना किसी कठिनाई के कर। So our next point is suitable communication or instructional channel, resource room, guidance and counseling, medical assistance or facility. Let's explain these points one by one. In order to create healthy disabled friendly environment, school must use or incorporate versatile teaching or instructional mediums that facilitate the students' learning in spite of their disability. School must equip its classroom with projectors, audiovisual equipments, panel boards, smart boards, by which the communication can be easily processed to the students with special needs. उपयुक्त संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण के साधनों की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत प्रोजेक्टर्स, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, पैनल बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स आते हैं। इन माध्यमों का प्रयोग करके संप्रेषण प्रक्रिया को वास्तविक एवं अनुकूल बनाया जा सकता है। So our next point is resource room. There should be a well-equipped resource room equipped with all type of resources meeting to the needs of diversified learners in a school. A well-equipped resource room meant for the individual assistance to the students with disability in relation to their problems and difficulties, both in the terms of physically and psychologically. Resource room, संसाधन कक्ष। संसाधन कक्ष समावेशी शिक्षा पद्धति की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। संसाधन कक्ष वह कक्ष होता है जहां पर किसी भी प्रकार की विकलांगता के पूरक शिक्षण या सह शिक्षण सामग्री उपलब्ध होती है। Our next point is guidance and counseling. Keeping in view the diverse problem of the students with different kind of disabilities, school must have to organize the special guidance and counseling programs for these students, by which student will able to overcome the barriers in their educational and social setup. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक छात्र में विभिन्न विभिन्न रुचियां और अभिवृत्तियां पाई जाती हैं, अतः प्रत्येक छात्र को अपनी इन अभिवृत्तियों के अनुसार पाठ्य एवं सहपाठ्य क्रियाओं को चयनित करना होता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस द्वारा प्रत्येक छात्र या विद्यार्थी अपने समक्ष आने वाली शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कठिनाइयों को दूर कर सकता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल असिस्टेंस, चिकित्सा सहायता, मेडिकल असिस्टेंस और फैसिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। किसी भी आपातकाल की स्थिति में विद्यालय में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इन आपात स्थितियों से तत्काल निपटा जा सके, अतः किसी प्रकार की भी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हानि ना हो। Our next points are recreational activities, parents and community involvement, and students coordination. First of all, let's discuss recreational activities. The school must have to organize recreational activities by which the students with special needs can shape their lives and personalities. In this regard, school can celebrate or organize different festivals, yoga camps, and in addition to this, the school must provide different type of sports facilities, indoor or outdoor, as according to the type of disability or need. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सृजनात्मक क्रियाएं। विद्यालय द्वारा समय समय पर सृजनात्मक क्रियाओं का आयोजन करते रहना चाहिए जिनके माध्यम से छात्र अपने जीवन एवं व्यक्तित्व को निखार सकें। इन क्रियाओं में
करिकुलर और को करिकुलर गेम्स, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक के संदर्भ में कोई भी विद्यालय अपने प्रांगण में विभिन्न प्रकार के त्योहार, योगा कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, parents and community involvement. The goal of inclusion cannot be entirely achieved without the participation of parents and community, because they can better reflect and accommodate the needs of disabled students in social and educational context. Parents and community involvement, अभिभावक एवं सामुदायिक सहभागिता। भी स्कूल को समावेशी प्रारूप देने के लिए अभिभावकों एवं समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण है। बिना अभिभावक एवं सामुदायिक योगदान के कोई भी विद्यालय समावेशी प्रारूप प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप समुदाय द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः विद्यालय का समावेशी प्रारूप प्राप्त करने हेतु समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां तक अभिभावकों का प्रश्न है, वह अपने बच्चों अतः विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, जरूरतों, रुचियों, अभिवृत्तियों को अधिक अच्छे ढंग से विद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह समय समय पर विद्यालय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन, छात्र समायोजन। Inclusion is a process in which disabled students are accommodated with normal students in regular classroom settings. In order to create disabled friendly environment in a school, there should be feeling of help, cooperation and understanding among normal students towards students with special needs. For this purpose, school can motivate students through value education and by giving them understanding of disability. किसी भी विद्यालय में या समाज में समावेशी प्रारूप प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि वहां पर सामान्य बच्चों के असक्षम बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। इस उद्देश्य को विद्यालय सामान्य बच्चों में विकलांगता के विषय में जानकारी देकर एवं मूल्य शिक्षा प्रदान करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कक्षा के अंदर या विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच समायोजन की अभिवृत्ति नहीं पाई जाए तो चाहकर भी विद्यालय संपूर्ण रूप से समावेशी प्रारूप प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि समय समय पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं जिसमें सामान्य बच्चों को असक्षम बच्चों के विषय में जानकारी दी जाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन। थैंक्स अ लॉट।